हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पाकिस्तानमी। मेरा नाम उज़ैर यूनुस है और आज की गुफ्तगू शुरू करने से पहले आई विल डू अ शेमलेस प्लग ऑफ माय अदर पॉडकास्ट नाजुक मोड़। आप में से काफ़ी लोग कहते हैं आप अपने व्यूज़ शेयर नहीं करते, तो वो अलग पॉडकास्ट है, उस पर जाके आप चेक करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आई को होस्टेड विद अमर रहीम शमसी एंड वी ट्राई टू कवर द डेवलपमेंट्स ऑफ द वीक पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर। इंडिया की हम बात करते हैं, मिड टर्म्स कवर किए हैं वगैरह वगैरह, सो डू प्लीज चेक इट आउट। लेकिन आज की गुफ्तगू, वी हैव अली फरीद ख्वाजा साहब, चेयरमैन के ट्रेड सिक्योरिटीज, somebody जो मार्केट्स को और फाइनेंशियल सेक्टर को बड़ी गहराई से जानते हैं, तो आज सोचा उनसे बात की जाए। काफ़ी लेट है उनका टाइम पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि ज़रूरत पड़ी, माहौल ऐसा है कि हमने कहा कि आज गुफ्तगू रात को ही बैठक लगाई जाए। गम आवर जिसे कहते हैं अली भाई, गम आवर में हम आपके साथ बैठे हैं। पहले तो बताएं, ठीक है, सफर कैसा रहा आपका? It's always a pleasure to talk to you. So thank you for inviting me on your podcast. And सफर सोचते ही में इस सोच में ही घूम रहा कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है और आगे क्या होगा, और लोगों को नहीं पता तो किस तरह बताया भी जाए कि नहीं बताया जाए। शुड बी बेरर ऑफ बैड न्यूज और शुड बी जस्ट कीप क्वाइट। सो यही थॉट्स या चलती रही दो इन माय 2 hours फ्लाइट बिटवीन दुबई टू कराची। सो या आई जस्ट लैंडेड इन कराची। तो मेरा तो व्यू है, देखे मैं आपको टेक्स्ट भी ऑफलाइन यही कर रहा था। आई थिंक इट इज आवर ड्यूटी टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल टू द पीपल, क्योंकि कितनी दफा इतना झूठ मीडिया पे बोला जाता है लोगों से काफी टाइम से, एंड आई थिंक इट्स some time for some brutal honesty is always there, especially अभी क्योंकि माहौल काफी खराब है। पहले तो help us understand how did you view the last 48 hours in Pakistan, जहां फाइनेंस मिनिस्टर हु सितंबर में जब वो आए तो बड़ी शौकिया कह रहे थे कि अभी तो 200 से नीचे मैं लेके जाऊंगा, उसकी रियल वैल्यू 190 भी नहीं है, फलाना फलाना। बट नाउ आफ्टर मंथ्स पासिंग बाय, a lot of extra damage in my view. I would love your assessment of it, to the economy, to credibility, to overall stability in the country. The rupee is in free fall, 262 pe as of today, Friday, when we're recording this, Saturday morning for you. That's where it finished. Some people are saying maybe Monday, Tuesday, a bit more, and then it'll stabilize around this, around 260, 270. How have you seen the last 48 hours and assessed all that has unfolded in Pakistan? Deep question and a lot of points in your statement. Last 48 hours were inevitable. So now we are, in fact, as we move forward, we are just hitting the reality and getting close to the end game, and which started not because of Dar. Of course, he was a continuation of the comedy of errors which has been going on for many years now, and but I think so. It's tragic, and it shows that economics wins, markets win. You can't just come up with something and say okay, 200 कर देते हैं, 100 कर देते हैं. Um, Economics wins, right? Markets win. A person can't fight the market, and that's a lesson which unfortunately Pakistan learns and then forgets, and many other countries have in the past also learned that in the hard way. And unfortunately now it seems as if now that it's good in a way that Pakistan is realizing that it's good that we are forced to now follow orthodox economic policies, because मेरे ख्याल में ज्यादा डेंजरस होता अगर ऑयल प्राइसेस नीचे आ जाते और पाकिस्तान को या यूएस या कोई जंग हो जाती और यूएस आके पैसे दे देता, हमें बेल आउट कर देता, और फिर डार साहब कहते कि देखो जी मैंने कहा था और मैंने कर दिया, और लोग कहते शाबाश शाबाश, और हम उस चीज को सच मान जाते। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो शायद अच्छा ही है कि वी हैव लर्नड द लेसन दैट वी हैव टू फॉलो ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक पॉलिसीज, and we should not try to claim that we can pull a rabbit from the hat, and वो जो हमने शुरू में बात की कि लोगों को बेवकूफ आप कब तक बनाएंगे, जी बिल्कुल। या और अपने इसके आप को साथ, बेवकूफ इससे बनाएंगे। पहले कि लोग जो है वो कमेंट्स में लिखना शुरू कर दें कि मैं और अली फरीद ख्वाजा सेलिब्रेट कर रहे हैं केओस, खुशी की बात नहीं है कि 30-40% तक इन्फ्लेशन जाए। काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी सारा नुकसान हुआ और अभी और होगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉवर्टी, एक्सेट्रा।
So we're not celebrating. I want to be clear on this to the audience. हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में बहुत टाइम से एक अनऑर्थोडॉक्स इररेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क चलाया गया, और उम्मीद है कि इस लेसन से ना सिर्फ अवाम लोग इस बात को समझें, और बिलखुसूस लोग जो पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल एलीट्स हैं पाकिस्तान के, वो इस बात को समझें कि ये इस तरह से मुल्क नहीं चलाए जाते, बिलखुसूस 23 करोड़ का कोई जो मुल्क हो। अली, इसमें अब अगर हम आगे देखें अगले 3-4 हफ्तों में, व्हाट डू यू सी हैपनिंग ब्रॉडली स्पीकिंग इन द ओवरऑल इकोनॉमिक सिनेरियो? क्योंकि 31 तारीख को IMF डेलीगेशन इज कमिंग फॉर 9 days, व्हिच अगेन लाइक यूजुअली 4-5 दिन मैक्सिमम होता है। दे कमिंग फॉर अ व्हाइल। एनर्जी प्राइसेस करनी है, प्राइस डिस्टोर्शन अक्रॉस द इकोनॉमी इस वक्त है। What are some things that you think people should know and understand and appreciate over what's coming down the pipe in the next 4 to 6 weeks in Pakistan? Um, Firstly, I think we should now all realize that debt restructuring is the only way forward, right? Like we have hit that level जहाँ पे हमारा जो debt है वो unsustainable level पर हो गया है, और हम इधर से borrow करके उधर के पैसे वापस कर दे, और उधर के borrow करके इधर वापस कर दे, जो हम काफी सालों से कर रहे हैं, that time is over. And so which means that Pakistan, the only path forward, which perhaps puts us in a better position in terms of sustain, puts us in a path which might have a silver lining at the end of it, though it might be a very painful path, starts by recognizing that that's the only solution left, right? एंड हमें उसे इतना हम डरते क्यों है सोल्यूशन से? हम उससे इसलिए डरते हैं क्योंकि हमने पॉलिटिकली उस चीज को एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्लोगन बना दिया है। डिफॉल्ट का वर्ड ऐसा हमने वो कर दिया है कि जैसे उसके बाद मुल्क में तबाही पड़ जाएगी और जी लोग सड़कों पर आ जाएंगे, और दैट्स नॉट द केस, राइट? लाइक डिफॉल्ट मीन्स दैट यू विल गो टू योर डेटर्स एंड यू विल टेल देम दैट हम पैसा अभी नहीं वापस कर सकते आपका, एंड वी नीड टू रिस्ट्रक्चर इट, विच मीन्स आइदर वी विल से कि आप हमें अभी देने के बजाय आप इसको एक्सटेंड कर दे। वी विल नेगोशिएट विद देम। The period which will be difficult will be that period during which the negotiations are going on. जितनी थोड़ी देर में हम negotiations को complete करते हैं उतना पाकिस्तान के लिए बेहतर है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हम मसले को अंडरस्टैंड करें, उसको एक्सेप्ट करें, अपने पॉलिटिकल पॉलिसीज मिस्टेक्स जो हमने पहले की हुई है उनको हम रिकग्नाइज करें कि ये मिस्टेक्स है, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे हम हमारे पास पॉलिटिकल स्पेस नहीं होगी ये सारी कॉन्वर्सेशंस करने के लिए। और इसमें अगेन एक फॉर द लेमैन ऑडियंस, ये पाकिस्तान के बाज़ारों में घरों के अंदर लोग अमूमन करते हैं। आप अगर काम करते हैं, आप तिजारत करते हैं, आपका नुकसान हो गया तो आप जाते हैं जिनसे आपने क्रेडिट पे माल लिया होता है, कहते हैं भाईजान नुकसान हो गया, थोड़े 90 दिन और दे दो, राइट? तो इट्स नॉट, ये दुनिया में इसी तरह काम चलता है, एंड इट्स नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज यू सेड। बट बिफोर वी गो इनटू कैसे होगा ये प्रोसेस, एंड अगेन इन द मिडल, how do you navigate this cycle ke agar short amount of time, long amount of time, is this just an external debt problem, or is this also a need for domestic debt restructuring? Because again, I'm asking this, Shaukat Tareen, the former finance minister, the successor finance minister if PTI wins again, as Imran Khan has said this week as well, said that you kind of need both. So help us understand what needs to happen. Is this just on the external side, and who will be the parties that Pakistan needs to negotiate with? Is it like the multilateral IFIs? Is it China? What does that? Who are the players involved here? It's a great question and thank you for asking that. I think जो शौकत तरीन का बयान है और काफी डिटेल बयान है, I feel that he has learned that playbook from people who are expert in it, who I think he has been talking to IMF, or he has been talking to previous ex-IMF people. And I think that realization is with almost with everybody who matters. Everybody knows that that's the path forward. And they know it not just from today, they know it from a while back, but nobody wanted to get into that position जहां पे डिफॉल्ट उनकी बुक उनकी उस पे होता, so घर they की just बात घर में, घर की बात घर में रखना चाहते थे।
हाँ, वो कहते थे यार अभी असद उमर की जब गवर्नमेंट आई, जब भी आईएमएफ ने उनको ये समझाया, जो आईएमएफ के दोस्त वगैरह हैं, उन्होंने ये समझाया कि आप रिस्ट्रक्चरिंग करें, आप टू गेट दैट फिजिकल स्पेस, आप अपने जाए लेंडर्स के पास और उनसे चाइना से बात करें। हम तो दैट गोज टू योर सेकंड क्वेश्चन। 25% of Pakistan's debt is to multilateral agencies like IMF, World Bank, ADB, Islamic Development Bank. Um, uh, commercial debt is around less than 7% of the overall debt. तो जो ज्यादा जो डर होता है डिफॉल्ट का, वो कमर्शियल डेट के ऊपर होता है. लकीली फॉर पाकिस्तान दैट्स नॉट अ बिग क्वांटम. आई थिंक $7 billion इज लेफ्ट. सो जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है, विच इज 70 to 73 odd percent, that's with um, um, uh, bilateral loans with countries such as China, Saudi Arabia, and the Paris Club. So negotiations की जो हम बात कर रहे हैं, debt restructuring की जो हम बात कर रहे हैं, we primarily talking about that Pakistan will need to go and talk to these countries. Now we know that those conversations have been going on for a while. जब जब साउथ चाइना कहते हैं, हम खबरें सुनते हैं कि चाइना रोल ओवर कर देगा डेट को, दैट इज इन अ फॉर्म ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग. या जहाँ पे हम जाके सऊदी से कहते हैं कि हम आपका लोन ड्यू है, आप प्लीज उसको रोल ओवर कर दे, थोड़ा सा लोन और दे दे ताकि आपका लोन वापस कर दे. तो दो पाकिस्तान हैज बीन इन अ काइंड ऑफ अ रीस्ट्रक्चरिंग पोजिशन सिंस द लास्ट 3 years. But I think the time has come that they need to do it formally. So formally, what does that mean? Formally, that means जो शौकत तरीन ने बोला, दैट इज द प्ले बुक. थोड़ी सी गलती उन्होंने शायद उन्होंने की या कोर्ट उन्होंने की. सो फॉर एग्जांपल ही सेड के यू अपॉइंट अ कमर्शियल बैंक एज एन एडवाइजर. कमर्शियल बैंक की एडवाइस नहीं देते क्योंकि कमर्शियल बैंक खुद लेंडिंग कर रहे होते हैं, तो वो कॉन्फ्लिक्टेड होते हैं. सो दे आर फाइनेंशियल एडवाइजर्स, फर्म्स लाइक Lazard, Rothschild, Clifford Chance, who provide that kind of advice. In fact, Raza Bakir just became head of a firm called Marshall and Alvarez, where his role is to do exactly मैं this kind यही of कहने advice. वाला था कि दैट्स इट्स अ स्पेशल फील्ड. इट्स नॉट लाइक कि आप सुबह उठे मुंह धोए और आप रिस्ट्रक्चरिंग करने बैठ गए. देयर आर एडवाइजर्स हु स्पेशलाइज इन रनिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस. Bilkul. And many countries have gone through that. Like, East Asian countries, many went through. All of the East Asian countries went through it in the late 90s. Russia went through it. Ukraine went through it. Of course, a lot of the Latin American countries have been frequent defaulters. Sri Lanka is going through that process right now. So many countries have had. It's a part of emerging markets risk and dynamics that you go through such periods. The important thing is that you should learn from it, and there's only one lesson to learn out of it, and that lesson is that post default you start building your reserves. यही लेसन था जो 91 में इंडिया ने लर्न किया, यही लेसन था जो रशिया ने लर्न किया, यही लेसन था जो ईस्टर्न एशियन इकोनॉमीज ने लर्न किया कि आपके रिजर्व ज्यादा होना चाहिए. अब रिजर्व ज्यादा करने के तीन ही तरीके हैं. रिजर्व मतलब डॉलर रिजर्व ज्यादा होना चाहिए. रिजर्व उसके ज्यादा करने के तीन तरीके, कि एक आपकी एक्सपोर्ट ज्यादा होनी चाहिए आपकी इंपोर्ट से, दूसरा आपके रेमिटेंसेस अगर आ रहे हैं बाहर से वो ज्यादा होना चाहिए, और तीसरा है कि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आनी चाहिए. सो यू फॉलो दोज पॉलिसीज कंसिस्टेंटली which leads you to a reserves built up. So that's on the side of the long term. Coming to your point in terms of short term, what will happen? Short term, there is a painful period. The painful period is during the time during which this restructuring happens. So Pakistan kya hoga, if we hire advisors, those advisors will then inform IMF and all the creditors that we are going through, we will ask for restructuring of our debt. When you announce that, the rating agencies put you in selective default. So they suspend your coverage and they say you in suspended default. The implication of that is यानी that कि सॉरी आम अल्फाज में जब वो रेटिंग्स एजेंसीज टेक दिस एक्शन इज बेसिकली सेइंग कि बाजार में अब जो है कोई आपको और कर्जा इस वक्त नहीं दे रहा, क्योंकि आप कर्जे के जो लिया हुआ है उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं उसका करना क्या. एग्जैक्टली आपने वो प्रोसेस स्टार्ट कर दी है कि आप उस पर बातचीत कर रहे हैं. और आपने बहुत अच्छी मिसाल दी थी कि पाकिस्तान में भी बैंकों में हर वक्त लोग डिफॉल्ट करते हैं और जाके बैंकों से यही प्रोसेस रन करते हैं. उनको जाके बोलते हैं कि जी अभी हमारे पास पैसा नहीं है, मुल्क हमारी कंपनी का हालात खराब है, आप हमें थोड़ा सा डेट को एक्सटेंड कर दे ताकि हम आपको बाद में पे कर दें. तो ये दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस, और इसका ये मतलब नहीं है कि वो कंपनी बंद हो जाएगी. आईएमएफ का एक पूरा प्रोग्राम है जो उन कंट्रीज के लिए है जो इस पीरियड में गुजर रहे होते हैं. तो वो आपको उस प्रोग्राम के थ्रू लेंडिंग फिर भी देते रहेंगे ताकि
आपकी इकोनॉमी फंक्शन करती रहे। अम, मगर जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आता है वो है कि उस टाइम पे आपकी एलसीज खुलना बंद हो जाती है, क्योंकि बाकी कमर्शियल बैंक्स भी और जो बाकी क्रेडिटर्स है वो भी आपके साथ एंगेज करते हुए घबराते हैं। पाकिस्तान में markets are already considering us to have been defaulted, right? Like, see, the credit default spreads are telling you that the markets think that you have defaulted or you're about to default. I So think Yusuf Nazar incrementally, Saab, jo hai, who you know very well, he's a financial expert and I trust his judgment very well. The other day he told me, and we were on a show together, that tech selective default तो हो चुका है पाकिस्तान का। आप माने या ना माने, एलसी नहीं खुल रही, या कोई पाकिस्तानी बैंक जा रहा है और कह रहा है मुझे मेरे $1000 मेरे एफसीवाई से निकाल के दो, और उसको 500 मिल रहे हैं, इसका मतलब है आप कर चुके हैं, आप मानना नहीं चाह रहे। एब्सोल्युटली, सो जिसका मतलब ये है कि इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट हमारे लिए कोई होगा नहीं, क्योंकि हम तो पहले से ही उस सिचुएशन के अंदर है। तो इसलिए मैंने पहले ये बात की कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रियलाइज this, that we have reached that stage, so this is we should not be so scared, because वो तो पहले से हमारे साथ हो रहा है। मगर उस इंपोर्ट्स जिसका मगर इसका मतलब ये है कि जब तक आपका डिफॉल्ट का प्रोसेस रिस्ट्रक्चरिंग नहीं होती, उस टाइम तक imports पे हमें we will struggle with trade, स्पेशली आपकी इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, जिसका मतलब ये है कि मुल्क के अंदर महंगाई भी रही, इन्फ्लेशन जो है वो ज्यादा हो जाएगी, एक्सचेंज रेट डिप्रिसिएशन और होगी। वो कितनी होती है? यूजली एक्सचेंज रेट ओवरशूट्स एंड देन सेटल्स बैक। तो क्योंकि शुरू शुरू में लोग घबरा जाते हैं, जब घबरा जाते हैं तो स्पेकुलेटिव रन होता है। तो सो इट्स प्रोबेबल दैट करेंसी माइट ओवरशूट। टिपिकली अराउंड 40% डिप्रिसिएशन होती है पाकिस्तान में। इफेक्टिवली 25 to 30% डिप्रिसिएशन तो वैसे ही हो गई है, पिछले 2 साल से 20% हुई है, तो ऑलमोस्ट 40% हो गई है। सो परहैप्स अनदर 10% depreciation from here. It might overshoot, but it might come back after that. मगर उस इन्फ्लेशन का और फिर जो आपको जो सारे स्टेप्स लेने पड़ेंगे टू रिफॉर्म द इकोनॉमी, दैट हैज अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन इन्फ्लेशन। महंगाई जो है वो बढ़ती जाएगी, साथ साथ मेरे ख्याल में ऑयल प्राइसेस ऊपर जाएंगी, क्योंकि चाइना ने अपनी इकोनॉमी खोल रहा है। बहुत मुमकिन है कि ऑयल प्राइसेस जो है वो $100 पे दोबारा टच कर जाए, मेरे ख्याल में कर जाएंगी। तो उस इन्वायरमेंट में वी आर लुकिंग एट द मेन रिस्क टू पाकिस्तान इकोनॉमी इज फ्रॉम हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन में that means a paradigm change in the framework through which we look at valuations, so we look at accounting. So that's the main risk which we are looking at now. And the sooner we restructure, the better. So the positive way of looking, the more optimistic way of looking at it, or the hopeful way of looking at it is, बिकॉज ये चीजें नई नहीं है, ये पिछले 3 सालों से चल रही है। तो चाइना को भी इसका एहसास होना चाहिए, सऊदी अरेबिया से भी हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही होंगी इस टॉपिक पे। सो हो सक जित के हम जल्दी रीनेगोशिएट कर दें, और जितना हम जल्दी करेंगे उतना हमारे लिए फायदा है। आई थिंक मुझे इसके लगता है कि अंदर इससे पहले कि आप उस तरफ जाएं कि व्हाट यू आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ टाइमलाइन, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था, बिकॉज यू सेड ऑब्वियसली रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द इकोनॉमी भी जरूरी है। इसके अंदर डज द does the pace of renegotiation get impacted by the credibility and scale of the reform effort that the government is signaling? How important is it that the government not only says we're going to restructuring, but in parallel convince the creditors and not only the international community, but domestic investors, domestic economic actors के यार ये जो कसिनो इकोनॉमी हमने बनाई हुई है, हम इसको खत्म कर रहे हैं, no matter what happens. And here are the 5 credible steps we've already taken before we come and sit down to the table. Is that does that is that an important step? Is what I wanted to ask from you. it's the most critical step. You're right. So I think that unfortunately, and I'm struggling to say this, but I feel that IMF will ask the same thing when they are coming in this mission. So I know that the Prime Minister has said कि हमें IMF के पैसे मिल जाएंगे, मगर I feel that that's also the message which IMF might convey during the visit right now. And I feel that that's also what the Saudis and the Chinese would be saying to the government right now. That's only my perception. But I think that given that everybody realizes that, and Pakistan does have the main problem Pakistan has is because over the last
3 years. And I'm emphasizing that it's not just Dar, it was also Miftah, and it was also the people before him, and starting from Asad Umar, especially in the last, since Imran Khan's regime came, is that we have consistently signaled that we have no political will to do any of the reforms. Not only that, so I would actually put the blame on Imran Khan from that perspective, that because if you remember, I think the politicizing of these reforms accelerated in his time period, when as soon as he came, he said कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, और पूरा 1 साल लगाया उन्होंने और जगह से पैसे। ये कहना कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे का मतलब यही था कि हम ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक पॉलिसीज और रिफॉर्म को नहीं करेंगे, क्योंकि हम किसी और से पैसे बोरो कर लेंगे, और जो जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। आई हमने थिंक एक इसमें साल एक और चीज इंपॉर्टेंट है याद दिलाने की लोगों को, क्योंकि आई थिंक आप जैसे और मेरे जैसे लोग जो मईशत को रोज बिजनेस न्यूज़पेपर्स जो हैं वो पढ़ पढ़ के फॉलो बड़ा क्लोजली करते हैं। आई थिंक द लेमैन और रेगुलर ऑडियंस इज फॉरगेट कि वो बीच में कहते हैं कि जी जबरदस्त हो गई थी इकोनॉमी। वो इसलिए जबरदस्त हुई थी क्योंकि कोरोना वायरस आया था, पाकिस्तान डिड बेटर ऑन द पब्लिक हेल्थ साइड ऑफ कोविड, एंड उससे पैसे मिले थे बहुत ज्यादा पाकिस्तान को आईएमएफ के थ्रू, बाकी मल्टीलैटरल्स के थ्रू, एंड सो दैट क्रिएटेड द इल्यूजन ऑफ स्टेबिलिटी व्हेन देयर वाज नन। इट वाज लाइक आपने स्टेरॉइड का टीका लगा दिया है, उससे जान आ गई है आपके अंदर, लेकिन जो अंडरलाइंग इशू थे वो थे और एग्जैसरबेट हो चुके थे उस वक्त। जी, और मैं तो उसको स्टीरॉयड का टीका भी नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा कि दैट वाज लाइक टेकिंग अ ड्रग। आपने यूरेन का टीका लगा दिया था और उसकी वजह से आप थोड़ा हाई पे चले गए थे। यू आर टोटली राइट कि उस वक्त आईएमएफ ने फ्री मनी दिया था, दे डिड एसडीआर एलोकेशन, देन दे गेव पाकिस्तान $2.7 billion। उस टाइम पे आपको चाहिए था कि आप उसको यूज करते अपने रिजर्व्स बिल्डअप करने के लिए, आपने उसके बजाय कहा कि हम सबको 0% इंटरेस्ट रेट पे कर्जे देंगे। तो आपने आईएमएफ को, ये तो मतलब बेसिकली आपने उनको प्रूफ किया कि आप बिल्कुल गलत, जब आप, अगर वो आपको सपोर्ट करने भी आएंगे तो आपको पैसे भी देंगे, आप उस पैसे से गलत इकोनॉमिक पॉलिसी करेंगे, सही पॉलिसी नहीं करेंगे। और जानते हुए, ये नहीं था कि पाकिस्तान को नहीं पता था, ये नहीं था कि हमारे पास उस वक्त ऐसे इकोनॉमिस्ट नहीं थे उस वक्त। आप, रजा बाके जो थे वो आईएमएफ थे, उनको उन सारी चीजों का मुझसे ज्यादा पता है। तो उस वक्त भी सबको ये पता था। हमने दानिस्ता तौर पर ये कहा कि हम पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को तरजीह देते हैं इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव्स पर। और ये चीज हमने इमरान खान के जाने के बाद, जब मिफ्ता आए, उनको पता था कि इमरान खान की हुकूमत ने जो ऑयल की सब्सिडी दी हुई है वो बहुत डेंजरस है। उन्होंने अपने पहले हफ्ते में वो चेंज नहीं किया, उनको 3 महीने लगे उस ऑयल सब्सिडी को खत्म करने के लिए। तो हम बार बार ये शो करते हैं कि हम जानते हुए भी कि क्या सही तरीका है, हम गलत लेते हैं क्योंकि हमने उसको पॉलिटिकल इशू बना दिया। द आयरॉनिक थिंग इज दैट, in the 90s, when the reform process started, 92, first under Nawaz Sharif, with Sartaj Aziz as the finance minister, and then with People's Party government, our economic policies were quite consistent. पॉलिटिकल चेंज होती रहती थी हर 2 साल के बाद, मगर इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी वो बड़ी कंसिस्टेंट थी। उनको इतना टाइम ही नहीं मिलता था कि चेंज करें किसी चीज को। शायद वो they did not at that time, they didn't use economy and economic policies as a tool. ये मुशर्रफ के बाद 2008 onwards, this slide started when we started using economic policy as a tool for political gains. And I think the divergence between Pakistan and India, and Pakistan and the rest of the world, really started at that time, and just it continued to go bad. First in 2008, we हमको 2008 के बाद कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं हुई, कोई मीनिंगफुल इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई। हमने अब एक्सचेंज रेट को पहले टूल बना के खेलना शुरू कर दिया। that affected our exports. So everything, just one after the other, we have kind of destroyed everything. आई थिंक उस वक्त डॉलर भी आ रहे थे, बोथ इन टर्म्स ऑफ द पोस्ट जीएफसी रीच फॉर यील्ड एंड द वॉर ऑन टेरर, तो उसने भी एक अगेन एक्सटर्नल फ्लो रेंट सीकिंग आ रही थी विच पाकिस्तान हैज बीन एन एडिक्ट ऑफ, और इस वक्त वो नहीं है रेंट। तो अगेन आई एग्री विथ यू, दैट्स प्रोबब्ली अ गुड थिंग कि अब आपने खुद अपना फैसला करना है। अली, हाउ डू यू एक्सप्लेन वन, फर्स्ट अप, so you were talking about how do you think this plays out, the restructuring process. I would love for you to elaborate a bit more in terms of, what the immediate next steps are. And then more importantly, how do we, again, as people who cover the economy and engage with the broader public, ignore the politics, right? The politicians, I don't think they're still showing a recognition that they need to be honest and brutally honest with the people of Pakistan. How do we explain to them
why and how this is important for them to also recognize, and then more importantly as constituents engage on this issue. ये ना हो कि फिर लोग जो है एक बार फिर वही स्लोगनियरिंग में फंस जाएं, पॉलिटिकल ट्रक की बत्ती जिसे हम कहते हैं कि उस पर लगा दिया किसी ने आपको, और आप असल जो सवाल है वो ना पूछें कि भाई ये कसीनो इकोनॉमी है जहां पाकिस्तान का पूरा सूबा सिंध जो है वो पूना से कम टैक्स कलेक्ट करता है रियल एस्टेट साइड पे, या आपके जो है लाहौर जिम खाना में 5,000 रुपये सालाना रेंट है उस जमीन का जहाँ 30 करोड़ होना चाहिए महाना. तो हाउ डू यू थिंक अबाउट engaging with people on this, but also how does this play out now? Gee, I wish somebody engages with people, because this is the most difficult thing, and that typically this is the role of the government. This is the role of the political parties to engage with public in mass. क्योंकि अगर इंडिविजुअल बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करनी है और तो उसमें तो जाहिर बात है जो है इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू स्टार्ट पेइंग टैक्सेस, टू स्टार्ट डीलिंग विद इन्फ्लेशन. सो और तो उससे क्या होगा कि व्हेन टैक्सेस विल गो अप, people will start trying to find more schemes of avoiding those taxes. People will start trying to move out of Pakistan, trying to take their money out of Pakistan. So brain drain will accelerate. The movement towards black economy will accelerate. और पिछले 12 महीने में यही चीजें हो रही है. कैश इन सर्कुलेशन बढ़ रहा है, आउटफ्लो ऑफ कैपिटल इतना बढ़ रहा है कि मुझे एक बैंक के representative मुझे कह रहे थे कि they are thinking of setting up wealth advisory businesses outside of Pakistan because पाकिस्तानियों का पैसा इतना बाहर आ रहा है. So अनफॉर्चुनेटली इंडिविजुअल के बेसिस पे अगर मैं और आप बात करेंगे तो हम अपने इंसेंटिव्स हमारे डिफरेंट होते हैं. कलेक्टिवली here this is the place where the role of the government and the role of the political parties is important, because they can teach people, they can make people understand that this is something which we have to do. We have to make a choice whether we want to see a stable Pakistan and a growing Pakistan where all of us are living comfortably and our families are living comfortably and our children are living comfortably, or do we want chaos? So unfortunately, again, it goes back to that same thing of political sloganeering. अगर हम हकीकी आज़ादी का नारा लगाते हैं तो अब economic stability का नारा लगाना भी बहुत important है, and it's a responsibility of the leaders. I don't think me and you or even any private entity can play that role. Yeah, I agree with you. I think we don't collectively even don't have the scale. आप मतलब पाकिस्तान के पूरे यूट्यूबर्स जर्नलिस्ट सबको अगर कन्विंस भी कर लें इसी नैरेटिव पे, the politicians don't play ball and the governments don't play ball, not much you can do. And I wanted to bring an example just to give people a sense of कि ये मुल्क रिकवर करते हैं इससे और तरक्की करते हैं इस प्रोसेस के बाद. मैक्सिकन पेसो क्राइसिस अगर सुनने वाले अपने लैपटॉप पे जाएं या फ़ोन पे जाएं, गूगल में टाइप करें तो उस पर आपको विकिपीडिया का पेज भी मिल जाएगा. दैट वाज अ क्रेजी क्राइसिस, और वो इतना क्रेजी क्राइसिस था कि अमेरिकी हुकूमत ने $50 अरब का जो है वो बेल आउट दिया था. और वो बेल आउट दिया गया था स्टेबलाइज करने के लिए मैक्सिको को, इसलिए क्योंकि उनके पॉलिटिशियंस ने एक एपेटाइट दिखाई थी to figure a way out and reform themselves and fix. And then of course ना उसके बाद जो है नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह वगैरह, मैक्सिको तरक्की करता है. मैक्सिको नाउ इज बीइंग टॉक्ड अबाउट एज एन ऑल्टरनेटिव नियर शोरिंग डेस्टिनेशन एज सप्लाई चेन्स मूव आउट ऑफ चाइना फॉर एग्जांपल. तो अगेन ये ज़रूरी है लोगों को एग्जांपल्स भी देना कि आप खुद गूगल पे जाके पढ़ लें कि वो क्राइसिस था, बड़ा पेनफुल क्राइसिस था, लेकिन दुनिया ने फिर मैक्सिको की मदद भी की और उस जमाने में $50 अरब का बेल आउट दिया गया था. तो हमें तो इतने चाहिए भी नहीं इस वक्त. तो अगेन it's not extraordinary. I wanted to bring that to the forefront. Ali, you obviously are coming from Dubai, and I, in the last few minutes of this conversation, want to touch on ke you were there talking to startup investors, startup community. Obviously, I still fundamentally believe, and I think you feel that way as well, that this bottom-up disruption is good for the economy, that innovation that's coming in through the startup community. But how was that conversation like being in Dubai at a time जहां पाकिस्तान में economic chaos है, 30-40% inflation की बात हो रही है? What were your takeaways from that? Just before that, very briefly, on the last point which you made, I think Pakistan, it's necessary for us to have responsible leaders, or some leaders who show that they're responsible, which is something which we are lacking. And
Secondly, you made a point about domestic. I think we will also need domestic debt restructuring. So I think that has to be a part of the package. हम सुनते रहते हैं कि सऊदी हमें सपोर्ट कर देगा या चाइना सपोर्ट कर देगा. आप उन कंट्रीज के पर्सपेक्टिव से देखिए कि आप उनको कह रहे हैं कि आप अपने लोगों को टैक्स करें, क्योंकि और वो जो टैक्स का पैसा है वो उनके लोगों का वो पाकिस्तान को दे दे, क्योंकि पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देंगे. और फिर हम तो दिखाते हैं कि हम उससे जुआ खेलते हैं, तो फिर भी हमें देते रहे. हाँ, तो और फिर हम क्या तो ये आई थिंक इट हैज रीच्ड अ स्टेज वेयर we have lost credibility, because it's not been one government, it hasn't been 1 year. So we have shown that over successive governments, almost all the political parties, neither of them have the political will to be responsible on economic policies. And I think that we have reached a stage where now these countries are also telling this to us politely and now directly and clearly. So hence we have reached a stage where there's no option Before but going to the, I think that's an important point, and just in a stream of consciousness, I think it's also important to point out here that there are non-political stakeholders who have stakes in the economy as well, who also need to reform themselves and their behavior about how they intersect with the economy. And again, uska jo disruptive क्या कहते हैं influence है economy के अंदर, whether it's in real estate, whether it's in infrastructure, whether it is in terms of what goods come in and go out of the country because they're conglomerates and really powerful. I think ये भी ज़रूरी है. And again, political leadership is necessary, but पाकिस्तान में हम सब जानते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है. Power does not only reside in the political process. There is Rawalpindi as well, and Rawalpindi has to be part of the solution here as well, because otherwise ना मुल्क बचेगा, ना उसमें stability होगी. And as you said early on, के the step to from 40% inflation to hyperinflation in a restructuring default like scenario does not take super long, और ये आंखें बंद होते ही हो जाता है. और इससे पहले कि ये हो, जरूरी है कि लोग समझे कि ये बड़ी ग्रेविटीज ऑफ द सिचुएशन को समझें. आपने बिल्कुल सही बात की. और फिर मैं एक और स्टेक होल्डर को भी ऐड करूंगा, विच आर द प्राइवेट बिजनेस ग्रुप्स. बिकॉज पाकिस्तान में, एज यू नो, दे आर द टॉप 20 ग्रुप्स कंट्रोल 60% ऑफ द कंपनीज विच आर लिस्टेड, राइट? सो दैट्स आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर. एंड उसमें मुझे थोड़ा सा ये इन दोनों नॉन पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, आर्मी एंड द प्राइवेट बिजनेस कम्युनिटी, इनको एक तरीके से झटका इनको डायरेक्ट हिट लग रही है. क्योंकि डिफॉल्ट जब हो रहा है, जब हमारी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है और हाइपर इन्फ्लेशन हो रही है, तो हमारे एसेट्स, मैं एज अ बिजनेस ओनर बात कर रहा हूँ, हमारे एसेट्स पे तो डिफॉल्ट पहले से हो रहा है कि मेरे एसेट, मैंने पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट की थी, मैंने अगर $5 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की थी, आज वो $2 मिलियन बच गई है, और वो और कम हो जाएगी क्योंकि रुपए की कीमत कम हो रही है. तो मुझे तो इस बात का एहसास मार्केट्स दिला देगी कि वी हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन, क्योंकि मुझे तो हिट लग गई है. तो मेरे ख्याल में बिजनेस कम्युनिटी को तो बड़ी आसानी से चीज नजर आ जाएगी, और उनको रियलाइज ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि टैक्स देना बेहतर है, क्योंकि वरना जो एसेट पे हिट लग रही है, दैट्स मोर डैमेजिंग देन जस्ट पेइंग 30% टैक्स. एंड आई थिंक एंड आई होप कि क्योंकि आर्मी के भी बिजनेस इंटरेस्ट है पाकिस्तान में, तो एटलीस्ट उनको अपने बिजनेस इंटरेस्ट से पता चलेगा कि लोग, हमारे बिजनेसेस में भी, हमारे कमर्शियल एंटिटीज पे भी, और हमारे एक हिट आ रही है इसकी वजह से. और ये जो हिट है ये इतनी स्ट्रांग है कि इससे हमारी जो सर्वाइवल है उस पे भी क्वेश्चन मार्क्स आएंगे, क्योंकि अगर हमारे पेट्रोल ही नहीं होगा तो हम टैंक्स किस तरह चलाएंगे. तो सो आई होप दैट this event or these events of on what's happening in the economy um, is taken serious enough by all stakeholders. So you're totally right that Army is an extremely important stakeholder. So are the private businessmen, and I hope that they're more sensitive because they have direct stakes in the economy. Politicians might not have those kind of direct stakes in Pakistan. Either they might not have businesses, so they are only relying on gaining political power, or the money might be outside the standard critique which is given on politicians. Yeah, and I'll add the third point that they might be in sectors like sugar and wheat and agriculture, which are technically resistant. लोगों ने चीनी और आटा तो लेना ही और agriculture तो चलना ही है, तो they might again feel a bit less of that brunt. Okay, so that's macroeconomy. Coming to your trip and the startup community,
takeaways from that, what did you find? Of course, matlab, I want to get your take, in the sense I couldn't be there, unfortunately. It's looked like a pretty good gathering of people and entrepreneurs and financiers, etc., but there's a crisis at home in the backdrop of this. And so what were the takeaways for you? So this was the Paklaunch Unconference. Paklaunch is this community of Pakistanis working in tech globally. It was created by Ali Fahad, and he has two partners, Salman and Taimur. So they were the hosts. It was a great event. The good thing about the event and Paklaunch community is that it's almost a bubble where people are more optimistic and you know. They celebrate success, and so it's a good positive environment in the depression, general depression, and skepticism which is in Pakistan. But because it's a bubble, and because it is that protected environment, it is in a way slightly disconnected with what's happening with the rest of the economy, and what's happening in the rest of the country. Um, so perhaps that was there, but for some time, for 2 3 days, for having that for 2 days is perhaps not a bad thing when you can just focus on the more positives. I think Pakistan's tech sector has a bright future because it's export driven. I think Pakistani developer talent will play an important role. I was saying at another webinar where you were there as well, that I think Pakistani developers will play the same role in Saudi Arabia, for example, in developing the Saudi tech sector, which Pakistani doctors play in the US healthcare sector, or Pakistani accountants play in the MENA financial system. So I think I'm very optimistic about the tech sector. On the venture capital sector, I am slightly more pessimistic and concerned, primarily because it was an outcome of a period where they had free money. The whole sector, the whole venture capital industry had free money because of negative interest rates. So we discussed this earlier in one of your earlier podcasts with you, that it was the same money which was going in crypto, and the same money by the same people in the same fund which was also going to startups. So when Shiba Inu was going up, people were celebrating. Similarly, when companies were going up, and you see that in the kind of people who were investing. So 19 years old bloggers or people who were doing podcasts suddenly started managing money. But what was the main premise? The main Ash, premise मैं भी was that manage कर रहा होता you money. should have done that. You could have done that. You could have done that. You're too critical to do that. You have to be happy person for that. But their pitch was that we will give you money, and then हम किसी और के पास जाएंगे क्योंकि हमारे पास ये कैमरा है और ये माइक है, और इससे हम आपको प्रमोट करेंगे और किसी और को जाके कहेंगे कि जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे कि वो भी आप पे पैसे डाले। तो जिसका मतलब है वो ये नहीं कह रहे थे कि हम आपको बताएंगे कि बिजनेस कैसा बनाओ। वो ये कह रहे थे कि हम आप पे पैसे डालने के बाद किसी और के पास ले जाएंगे जिसके पास ज्यादा पैसे है, क्योंकि हमारे पास सेकोया का एक्सेस है और क्लाइंडर पर्किंस का एक्सेस है। सो इस चीज को मल्टी लेवल मार्केटिंग कहते हैं। So it was no different from, it was ए just a आसान purely a money. अल्फाज में पॉन्जी स्कीम कहते हैं इसे। It was a Ponzi, it was a Ponzi scheme. So I think if you look at fund management or money management industry, it's a discipline. You need to have degrees to do that. And Pakistan VC sector still has to go through that maturity where it is treated like a discipline rather than saying कि यार मैंने तो बुक में पढ़ा था, बुक से पढ़ के मैंने सीखा है और मैं टेक का बंदा हूँ और मैं so because you could see that disconnect between what's happening. The last point on this is that the real impact which we will see is two. The first is that I don't think that many of these VC funds have marked their investment to current scenario. So their valuations are stale. So, when we're talking about my fund is up 4x or my fund is up 3x, your fund is up 4x on stale valuation. Now, technology companies like, their stock prices at tech sectors are down 70%, 80%, 90%. If you now take the current multiples of US listed companies and apply it on your companies, Pakistan, these funds would टिम be कुक पे down. कट्स ले रहा है इस वक्त भाई। हाँ, बिल्कुल। So it will have the same impact. The second thing is that if we are going into a default scenario, which we are, as in there's no other option. There will be a 2 year period where nobody will come and buy anything from here. So there won't be any exits by US companies coming and buying companies in Pakistan. आज कोई US की कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करती है तो पैसे ही नहीं बाहर निकाल सकेगी वो।
तो अगर एग्जिट नहीं होने अगले 2 साल तक, तो इसका मतलब है बायर्स जो हैं लोकल होंगे, तो फिर वैल्यूएशंस भी आपको लोकल मिलेगी। लोकल वैल्यूएशंस के लिए बेंचमार्क आपके पास सिर्फ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, तो आप देख लें कि उसमें मल्टीपल्स क्या है, 3 to 4 times earnings. So I think that realization is still lacking in the VC industry, which will come, I think, over the next 6 months. I think there's something interesting that maybe it's off topic, but I want to get your take on this because you know capital markets much, much better than I do. You said I'm critical. I'm critical because I was in college in the global financial crisis. तो मुझे आज तक वो दिन याद है जिस दिन लीमन ब्रदर्स क्रैश हुआ था. मैं अपनी कॉलेज के कैफेटेरिया में खड़े होकर CNBC एक स्क्रीन में और ब्लूमबर्ग दूसरी स्क्रीन में देख रहा था. And we saw it play out to the extent that लोग भूल जाते हैं, especially younger folks who didn't live through that or were really young and don't remember that, कि मेरी क्लास में इकॉन फाइनेंस की क्लास में मेरे से आगे जो एक साल सीनियर लोग थे उसमें 45 people were there. Two of them had jobs by the time they graduated. This is 2009. 2010, my year when I graduated, about 15, 18 of us had jobs. The rest took 6 more months and the economy slowly recovered. So I think we kind of got a discipline in terms of being prudent and conservative in our approach and a bit cynical about, hype in finance because we kind of saw it in front of our eyes about what happens when there's hype in finance. And I think it's a lesson. I would love for you to talk about this as well. At the individual level for people, especially young people, there's a discipline about even saving and investment. You cannot invest and save when you're 25, 28 years old thinking you're going to be a millionaire by the time you're 30. Or let's say पेंडेमिक में तो लोग 6 महीने में ही कोशिश कर रहे थे और कुछ हुआ क्योंकि बूम का टाइम था, एक हाइप थी. Saving and investment as an individual is a habit and it's a lifelong discipline in the sense that you manage risk and you accumulate capital and compound it over your entire life. Why? Because you want to retire ultimately. You may want to retire at 60. Somebody might want to retire at 50. Somebody might say, I love my job. I'll work till the day I die. My grandfather is an example of it. He worked throughout his life until basically his last 2 years of his life. And he lived to be almost 90. So I think it's important for people to understand that point, right? कि ये एक discipline है both on the managing money side, but also on the saving side, where what you do with your hard-earned savings, you have to accumulate them bit by bit. And if anybody tries to sell you on a scheme that is 5x in the next 6 months, they're probably running a multi-level marketing / Ponzi scheme. Absolutely. There's a saying in fund management industry that the primary rule of fund management is not to lose money. That, that's what it's about, not losing money. So you're totally right that the dreams of, it's not a get rich quick scheme. That's gambling, and which is okay. It's fine to go to a casino and gamble. It's, people become rich by doing that as well. But then you should know that you got rich by putting correct selecting red color and hitting the red color. Um, uh, what happened over here was that we started celebrating the people who got the red color and saying, okay, those guys becoming influencers and saying, no, that's how I did it. Yeah, and I think FTX collapse and everything associated with it is a lesson from the modern era in terms of what can go wrong. And I think it's hopefully through the down rounds and through all of that, a new generation of people who perhaps are not used to belt tightening and sort of valuations close to reality will learn things the hard way. And again, as you said, we should celebrate success and we should celebrate growth and we should celebrate profitability because that's the only way to grow, especially in a relatively poor country like Pakistan, to create opportunity for the many. But we should by no means think, I think even it connects to the macroeconomic crisis in Pakistan as well, कि 1990 में पाकिस्तान का GDP per capita चाइना से ज़्यादा था. आज चाइना तकरीबन 25% of external debt for Pakistan is owed to China. We just talked about needing to restructure with them. तो इसको 30 साल लगे हैं इस काम को होने में. तो इस काम से निकलने में भी 30 साल लगेंगे. अगर आपको कोई कहता है कि मैं आ जाऊंगा और अगले साल के अंदर जो है दूध की नदियां बहने लगेंगी, तो वो भी सियासतदान भी आपको मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम और पॉन्जी स्कीम ही बेच रहा है सियासी तौर पे. आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट. एंड अगेन अली, आई नो इट्स लेट इन द नाइट, but thank you so much for taking out the time and joining us. Always a pleasure listening to you, learning from you, and you're in Karachi, so maybe I'll ping you in the next couple of days to see what's up और क्या नई ताज़ी क्या चल रही है पाकिस्तान में.
Absolutely, it will be my pleasure, and hope things improve, and I hope that we start being honest with ourselves, and we by we I mean as a nation, as a country, and that's a good start. I think that's the start which we need. Just calling things how they are, and unfortunately, I how the way how where politics how the political situation is and what the political narrative is and how it is being aggravated in social media. I'm really concerned that I don't see any kind of political will or any kind of move towards that. So my biggest fear is that while on this podcast we spoke about us approaching economic rationality, or the need for us to approach economic rationality, I really don't see any of the political parties anywhere close to that. And which means that, and if all the political parties don't play that role, then who will? I don't think it's the arm. I don't think the army can play that role because they're not connected with the masses. It's not their job. They're not built for that. So that's the main thing which really worries me. That while we said that we need a responsible political force, I don't know who is going to Yeah. be that force. Yeah, no, I agree, and I'm equally pessimistic. And I'll give people a book recommendation to understand what happens when people don't approach rationality. It's called Sleepwalkers. It's about World War I, और उस पे बड़ी खूबसूरती से जो है ऑथर ने, छोटी सी किताब है, दिखाया है कि यूरोप के एलिट्स जंग कर रहे थे, लेकिन वो सोच नहीं रहे थे कि इस जंग से होगा क्या। और जब तक उनको ये मालूम हुआ कि जंग नहीं होनी चाहिए, इट वाज टू लेट, क्योंकि ट्रेनें चल चुकी थी, फौजी जा चुके थे, लाइंस पे आर्टिलरी लाइन अप हो चुकी थी। और फिर वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री हम सबके सामने मौजूद है। अगेन, ये इरैशनैलिटी जब आपके एलीट्स के अंदर आ जाए तो फिर देर नहीं लगती चीज़ों को चेंज होने में। इन द इकोनॉमिक साइड लीड्स टू हाइपर इन्फ्लेशन, इन जियो पॉलिटिक्स इट लीड्स टू अ वर्ल्ड वॉर। And again, I hope, maybe I hope we're proven wrong, Ali, on this, right? That the cynicism that we have, and the lack of positive views that we have in the political environment, I would love to be proven wrong on that, because that means millions of people will be in a better position than they are currently. But let's see. Bilkul, I totally agree with you. I So hope we are thank wrong, you. and I hope we get a leader. Thank you so much, and have a good evening, and we'll stay in touch with Office. Thank you. Khuda Hafiz.